नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण शर्मा आपके लिए आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। हमारे साथ श्री सुनील गर्ग जी हैं। सीए सुनील गर्ग जी बहुत रिनाउंड पर्सनालिटी हैं और इनका मैं इंट्रोडक्शन क्या करूं। मैं सर को सबसे पहले वेलकम करता हूं कि सर आपका हार्दिक धन्यवाद, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आकर के आपने इस शोभा को बढ़ाया। हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ही बड़ा सुनहरा मौका है कि इस चीज़ को समझना कि स्टार्टअप से रिलेटेड बहुत ज़्यादा एमएसएमई के ऊपर काफ़ी चर्चा हो रही है। एमएसएमई के ऊपर काफी चर्चा होने के बावजूद भी हमारे साथ बहुत सारे व्यूवर्स ये समझना चाहते हैं सर आपके माध्यम से कि स्टार्टअप के ऊपर क्या बेनिफिट है, क्योंकि इकोनॉमी एक नई तरीके से रिवाइव होने के लिए खड़ी है। इकोनॉमी में बहुत सारे लूप होल्स आ चुके हैं। आज के डेट में कोविड की वजह से जो ये सब प्रॉब्लम हुई है, जिसकी वजह से स्टार्टअप एक बहुत बड़ा एक नजरिया है जिसको समझने के लिए हम आपका वेलकम करते हैं सर। अगर मैं सर के बारे में कहना चाहूँ, सर ने क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंसी करी है मई 1992 में विद द फर्स्ट डिवीजन। 27 इयर्स का सर के पास एक्सपीरियंस है। और अगर इनकी इंटरपर्सनल स्किल्स की मैं बात करूं, सर जी बिजनेस पे एक रेनाउंड स्पीकर हैं और इन्होंने बहुत सारे राइटअप्स भी लिखे हुए हैं, आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, वेरियस न्यूज चैनल्स पे आते हैं लाइक जी बिजनेस, राज्यसभा टीवी, न्यूज एक्स, सीएनबीसी, आवाज एक्सेट्रा। सर का एक मनी गुरु चैनल चलता है जी बिजनेस पे, जो पिछले 3 साल से चल रहा है, जो ब्रॉडकास्ट एवरी ट्यूसडे आप देख सकते हो लाइव ऑन एयर पे चलता है। मैं सर का यहाँ पे और टाइम ना लेते हुए, सर का बहुत ही लिमिटेड टाइम है और सर की सेवाएं यहाँ लेते हुए हमारे व्यूवर्स के समय मैं सर को प्रेजेंट करता हूँ यहाँ पे। ओवर टू यू सर कि आप हमें स्टार्टअप से रिलेटेड कुछ नई चीजें और एबीसीडी ऑफ स्टार्टअप के बारे में बताएं कि उसके बेनिफिट क्या हैं, उसकी असिस्टेंस हम कैसे ले सकते हैं और स्टैंड अप और स्टार्टअप इंडिया स्कीम क्या होती है सर। Thank you, Praveen ji. First of all, I should thank you for choosing this topic, and this topic is very close to my heart because if India wants to lead and if we want to recover our economy, our young entrepreneurs has to play a very critical role in this matter. Right. As far as this topic is concerned, this Startup India was started by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji in 2015, and a lot of concessions were given to the startup. There is always a misconception about the definition of a startup. Whenever we think about a startup, we think something technological, highly skilled, some related to software technology. But Praveenji, I will tell you the definition of startup has completely changed now. Everything is a startup now. What we are doing, organizing a seminar, and if it results to a wealth creation or employment generation, then it is also a startup facility. So first of all, we will try to do do away with some myths about the startup. What is a startup? What are the benefits of the startup? How the process of registration is being done, and most important, what the income tax exemptions the government has proposed for the startup over the last 5 years. So many exemptions has been given to the startup. In this Finance Act 2020, even the ESOP taxation, which was a very critical issue regarding the ESOP taxation, that issue has also been resolved by this Finance Act. We will of course talk about the financing, how the financing, what financial assistance, and what DPIIT do, Department of Promotion of Internal Trade and Industries, what it do for the startup, and what is the role. We will discuss step by step all the points, and in the last, we will have the question answer. And if you have any important question during my presentation, so Praveenji, you are the moderator. You can ask me, you can stop me, but I will request you the question should be asked only about what I have deliberated, because a lot of questions which will automatically be solved at the end of my webinar. This I think so. So let us start, friends.
The topic is very interesting. Decoding startups. The name has been given by Shri Praveen Sharma ji. A very new idea. What are the benefits of Startup India? What is the registration process? We will discuss taxation and financing. Friends, first of all, before starting my deliberation, I know a lot of young professionals, my young colleagues are in the show, and young entrepreneurs are there. Friends, I will suggest you, for at least for the young chartered accountants and the professionals, this is an area of practice. You can develop this area as a practice, because if we talk about the startup ecosystem in India, though the DPIIT recognized startups number stands at around 30,000, but as per the estimates, the total number of startup in India is more than lakhs, maybe 4 lakhs. This is a unverified data, because a lot of persons even do not know the definition of startup. Secondly, as a chartered accountant, I qualified in 1992, as Praveen ji has said. Our area of practice is generally tax audits, auditing, taxation, and now GST after 2017. But this area of compliance and advising a startup is a very, very good area, because any startup, generally they are the young entrepreneur, they're young professionals. And if we can understand them, if we can provide all the services under one roof to them, so they will certainly preferred young professionals as their advisor, because they generally hesitate to go to the senior professionals due to the fee issue also, and they are not more comfortable with the very senior professionals. They certainly look for a young guy who can help them out. And I will suggest you, in addition to the income tax provisions, if you can study the Startup India and the labor laws, some bit of international taxation, because generally these startups, they have a dealing with the overseas billing, they have dealing with the overseas partners, and some knowledge about FERA and FEMA, some knowledge about the accounting standard, international accounting standard. And if we can develop all these areas, so it can be a good area for practice for my young professional. And friends, as I said in the beginning, everything is startup now. Can you imagine? I registered a construction company as a startup. A construction company as a startup. I will come to that when I will come to the definition of the startup. Now let us start. What are the benefits of a startup India? And for the detailed benefit, you can also go to the website of DPIIT. Actually, the controlling authority, the regulating authority is Department of Promotion of Internal Industries and Internal Trade. Earlier it was DIPP under the Ministry of Commerce. So the most important incentive is tax holiday. Startup gets not only tax holiday, but they have been given a bit concession in the carry forward of law 79, and then ESOP taxation, then capital gain taxation. So I will discuss all the sections under one slide. What are the benefits that has been given to the startup? Another benefit is, if you are a startup, if you are a recognized startup, and friends, recognition by DPIIT is almost an automatic process. You apply with the documents, and they give you registration, recognition within 3-4 days. And almost 9 labor laws and 3 environmental laws. If you self-certify, then the labor inspector will not come to you for 3 years. This is a concession given by Government of India to the startup, that you just certify yourself, self-certify yourself about the compliance of the law. Another benefit is, if you are going for the patent registration, 80% amount is subsidized by Government of India. And also, you might be knowing that tax from the patent income has been reduced to 10% under section
115 DPF. Another is the trademark registration, where you can get 50% subsidy from the government of India. So these two concessions are directly given to the startup. Another is government has set up a fund of 50,000 rupees, 50,000 crore rupees for funding the startup, and this fund is being routed through the venture capital, SEBI registered venture capital, and should be also doing a little bit of funding to the startups. Another important benefit is public procurement norms. As you know, Government of India, whenever PSUs purchase anything, they have to go for the publication, they have to give the advertisement, and there is a website, e-marketplace, I think the name is the website is e-name. And the startups, they are given benefits. The general conditions of turnover and general conditions, other conditions or EMD, they are not being asked for. So you can go there, you can register with the ENAM, but first of all, you have to get recognized by the DPIIT. There is concession, the winding up process, because these are new guys, a lot of comes and a lot of vanishes also. And the most important thing is technical support by DPIIT. The department, the Ministry of Commerce gives wholehearted technical support to a startup, to a recognized startup. Once you are registered there, you can have an incubator, you can have a consultant, you can go to them and they will guide you. Now let us understand what are the basics of the startup. Friends, you know all these companies, whether it is Flipkart, whether it is Oyo Rooms, Nykaa, Make My Trip, all these are startups. And I think as per the data available, we are creating a lot of unicorn. Every year we are adding to unicorn, and unicorn are those startups where the valuation exceeds 1 billion, almost 7,000 crore or 7,500 crore in this time. There are 5 basic conditions to be followed. They are the 5 basic conditions of the startups. Number 1, that startup can be a company or a LLP or a registered firm. Please understand, a proprietorship firm cannot be a startup, or a society business cannot be a startup. You have to incorporate your company either as a company or as a LLP, or if it is a firm, then it should be a registered firm. Number 2, company age. Earlier the period was 5 years, then becomes 7 years, and now the period of company up to the startup, you can be within the category of startup, recognized startup, up to 10 years of your incorporation now. Earlier it was 7 years, and for biotechnological entities were 10 years. Now 10 years, plain 10 years rule has been incorporated. You can be a startup up to 10 years of incorporation. To widen the scope of startup, the government has increased the limit of turnover. Earlier it was 25 crore. In the first it was 10, then it becomes 25 crore. Now up to 100 crore you will remain as a startup. And it should be a new entity. It should not be incorporated out of the old entity or by transferring the asset, by restructuring of the asset. Please understand, as given in other sections of the income tax also, like ATIA, IB, it should be a new entity. And the most important thing, which I said in the beginning of this webinar, the definition of startup. Earlier, the definition was a little complicated. It was to involve the technological or certificate from the government or certificate from incubator or from university. But now the definition has become very simple. And any eligible startup is, if you are doing any innovation, development, or improvement
Please understand, innovation, development or improvement of any product, service or process. See the definition, so wide definition. Or it is for the creation of wealth or for employment generation. Friends, you might be knowing Zomato, what they are doing. What they are doing? They are just getting orders, picking food from the restaurant and delivering to you. What is the technology? But it generates employment. It generates wealth. The valuation of Swiggy is another platform. The valuation is almost 3 billion now of Swiggy, more than 20,000 crore. What is Uber doing? Ola doing? Oyo Rooms doing? So all these companies, they have a new idea. They have developed the process, or they have given employment generation, or they created wealth. The definition of startup is now so wide that every activity can be covered under a startup, and this is the lack of knowledge, this is the lack of understanding. We do not go for the registration, as I said, and I will come to that. Only I think there are 32,747 DPIIT recognized startup as per the latest data available. But as per my information, as per unverified data, the total startup India can be as high as 4 lakhs units. But because they do not know the law, they do not understand the law, they are not coming forward. And it is the duty of the young professionals to encourage new persons, new entrepreneurs, young entrepreneurs, to get them registered with DPIIT. Out of them, only 233 get the exemption under Section 80 IAC. Why the number is so less, I will come to that also. And 3 to 3, they have, as I described about the funds of the funds, I think SIDBI is the regulating authority. Not only SIDBI, there are other agencies also, because government invests the fund in the venture capital. So you can go to those venture capitalists, or you can also be registered as a MSME unit. Please understand, there is no bar. Once you are registered as a startup, you cannot go for the MSME. Of course, MSME definition is something different. Now, as you know, in the COVID time, our Honorable Finance Minister Sita Raman, she has increased the limit. Now, earlier the MSME was defined as per the investment norms. Now, even up to 250 crore, you can be a medium industry. So up to 250 crore, you can be a MSME now. So please get yourself registered with startup and MSME, both you can. And now MSME covers not only the manufacturing industry, but also a service industry. What is the registration process? It's very simple, friends. Now, very, very simple. You have not to go to anywhere. Go to the website of DPIIT. They have a mobile app also. And you apply with the certificate of incorporation. If you are a company, then certificate of incorporation and memorandum. If you are LLP, then enclose your agreement, LLP agreement. If you are a firm, registered firm, then your partnership deed. But friends, keep it in mind, when I will come to the income tax exemptions, the income tax exemptions are not available to registered firm. This is available. Tax holiday for 3 years is available to a company or a LLP only, not for a firm. Hence, advise your clients, advise the entrepreneurs either to incorporate a company or a LLP firm, because otherwise they will not get a tax holiday under Section 80 IAC. While applying for the registration with DPIIT, the most important thing, your write-up. They want you, they ask you to write, to give what is your idea, what you are going to do. As I said, the definition includes innovation, development, improvement of product or service or process, or generates employment or wealth creation. Hence, while filling that form, you have to point out how my business, how my idea is going to fulfill one of the 5 criteria as I have given in the definition. Very simple process,
give the certificate of incorporation, any, or your write up, what you are going to do, and in 3-4 days you get registration from DPIIT side, DPIIT, and now you become a DPIIT recognized startup. Now coming to income tax exemptions, because this is the most attraction. This is the attraction any country, whether it is USA or Vietnam or Philippines or India, they are giving to a startup. As you know, the maximum number of startups are in Silicon Valley, USA, and India is ranked second or third for as a startup hub. This is the area which any startup wants to understand, any professional want to understand what the income tax exemptions are being offered to a startup unit. Friend, there are 6 kind of startup. I have compiled all the exemptions under one roof. The most important is corporate tax holiday. You are being given 3 years complete tax exemption. But what are the nitty-gritty of that? I will come to that. Another area was angel tax. This was hurting startups since 2015, rather 2016. How the problem has been solved by government? I myself, as Praveen ji introduced me, when I was on the various TV channels, I took a very aggressive debate on this topic. And thank God, government understands our concern. Government understands the concern of the startup, and we were able to get to the government of India that you please give relief. And accordingly, though it took almost 3 years and 5 notifications from the government, but now the definition and now the relief has been given to jail tax to a large number of the startup. I will come to that. Another is a capital gain exemption under section 54GB and 54EE. Now the carry forward and set off loss, as you know, friends, under section 79 in case of a private limited company, a relief has been given. ESOP taxation was another area which was haunting every startup, because they need senior guys, they need talent to be retained by giving ESOP or sweet equity. Now the taxation structure has been changed, and as I said, tax on the patent or the royalty now has been reduced to 10% under section BBF. Praveen ji, let us continue. Yeah. Any question or I continue? Continue, sir. No question right now. Okay. The most important relief given to startup is, of course, corporate tax holiday. But please, friends, understand there are so many if, but, kintu, parantu in this section. As I said, gross total income of an assessee being a company or a LLP. This deduction is available only to a company assessee or a LLP assessee, not to a registered firm. As I said, though a registered firm can be eligible startup under DPIIT, but Income Tax Act does not give relief to them. But 2 basic conditions. 1, it should be an eligible startup, and 2, the profit and gain should be derived from an eligible business. What is an eligible business and what is an eligible startup? Eligible business, as I said, these 5 conditions: innovation, development, improvement, and should be recognized by DPIIT. What is an eligible startup? I will come to the definition, because it includes 3 parameters. One, of course, is the turnover should not exceed 100 crore, and the incorporation between 1st April 2016 to March 2021. I will come in detail. Then, if you are eligible startup running an eligible business, or you are a company and LLP, then you will get 100% deduction under section 80 IAC for 3 consecutive assessment years. You choose any 3 years. Either it can be 1, 2, 3, it can be 4, 5, 6, it can be 7, 8, 9, or 8, 9, 10. Earlier, the period was 7 years, 3 years out of any 7 years. But this Finance Act 2020
this financial 20 that increased the period from 7 to 10 years. Now, the period everywhere has been now changed to 10 years. Earlier, it was 7 years somewhere, 10 years somewhere, some it was 7, somewhere 5 years. Now, the government has now given a equilibrium. 10 years has been given. So out of 10 years, you can choose any 3 years. But as I said earlier also, it should be a new business. It should not be formed by splitting up or reconstruction. Now, what is an eligible startup? It should be incorporated under within the period within a period of 1st April 2016 to 31st March 2021. Friends, understand, eligible startup can be of 10 years, but 80 IAC will be available for those who are incorporated after 1st April 2016. Meaning thereby, for example, if your company has been incorporated in 2012 or 2013, you will be eligible startup for other provisions of DPIIT. But for 80 IAC, you will not be eligible startup. Another question is being asked. For example, when the time was 7 years and I was not eligible, now the period has been increased to 10 years. Then whether can I now can I go for the registration? Of course, the answer is yes, you can go for the registration. As I said, when the time was 7 years and you were incorporated in 2012, for example, you were not eligible earlier for the DPIIT. Now the period has been extended to 10 years. Now you're eligible. Earlier it was 25 crore turnover. Now it is 100 crore. Now you become eligible again. But for getting the deduction under Section 80 IAC, the companies or the firm LLP which incorporated after 1st day of April 2016 are eligible only. Number 2, the turnover should not exceed 100 crore. Earlier it was 25 crore. Now this has been increased to 100 crore. And the other important criteria and other important condition, it should hold a certificate of eligible business from Inter-Ministerial Board of Certification. Friend, as I said, there are two kinds of registration with DPIIT. One is the recognition. As I said, very simple process. And I has given you the data. Out of 32,427 recognized startup, only 233. The data I think is not right. As per my information, around 2,000 already got the certificate from that interministerial board. So friends, as I said, first of all, you have to get yourself registered with the DPIIT. Then, if you want to get the registration, if you want to get the deduction under Section 80 IAC, you have to apply in form number 1, another form to get that certificate. And this certificate is given by Inter-Ministerial Board. There is a board where the secretaries of various ministries from Ministry of Finance, Ministry of Commerce and other industries, they come together and they decide whether this unit is eligible for 80 IAC benefit or not. Now, friends, understand, getting recognition from it, DPIIT is something different. Getting a certificate from Inter-Ministerial Board is something different. You might having a registration, you might having a certificate from recognition from DPIIT, you might not have a certificate. To get 80 IAC, you have to get the certificate from Inter-Ministerial Board. Now, the question arises, as I said, 3 years out of the 10 years. Which 3 years? But these 3 years should be consecutive. You cannot choose 2, then 4th and 6th. You have to choose 2, 3, 4. And while choosing that 3 years, it is a decision to be taken. It is a call to be taken either by the professional or by the entrepreneur. Because you know, friends, in the earlier year, generally, unit have losses. And when we make the computation of taxable income, how we compute? We have total income, then first adjust the loss, and then that out of the total income, the deduction is given to. So you please understand, if you are having a loss, and another criteria is about turnover. So you have to make a balance
between adjustment of loss, 10 years, 100 crore. So this decision is a very intelligent decision. You have to think when to take this call. Another important condition for claiming ATIAC is that we generally do not read this because this is not given in the section, that audit must be must, and the eligible business should be the only source of income, because this deduction is given for the business income only. If the firm is having any other income, say rental income or any other income, that income will not be eligible for deduction. And the most important, as you read in ATIA also, and other deduction section also, that if you are having any transaction with the group companies, sister concern, it should be at the arm's length price. Otherwise, what will the persons do? What the industry do? They try to shift higher profit in the units which get reduction under Section 80 IAC or 80 IA, and lower profit in their sister concern. Hence, this condition has been incorporated while getting the audit done or while filing the return of income. Please ensure the transaction with the sister concern are being done at arm's length price. Otherwise, the assessing officer has the power to assess the profit of that concern. Another important point about ATIAC is that though the government has given the deduction, but MAT is still applicable. Please understand, there is no relaxation in the MAT, which we have certainly proposed to the government of India, that there should be a relief to the MAT like given to IFSC unit or SCZ unit, but MAT is there. And turnover is another criteria. I said once you cross 100 crore, earlier it was 25 crore, friends. This year, this budget has increased the limit from 25 to 100 crore. And once that 100 crore is out, you are not eligible for ATIAC. As I said, first you have to got registered with the DPIIT as a recognized startup. Then for getting the registration under Section 80 IAC, you have to apply in form number 1, and along with all the balance sheets and ITR for 3 years. But if these are available, if you are a new unit, you are applying for in the year of incorporation, of course you can apply there. Then certainly you will not be having your audited balance sheet. But if you are an old concern, then you have to enclose your ITR with the balance sheet and audited balance sheet ITR, and then you will get approval from the interministerial group. As I said, the registration, as far as registration and recognition is concerned, it is very easy process. But getting a certificate from interministerial group, it's still not so easy. They are very lacunas, there are delays there. But you can go and you can contact with the DPIIT. You can present your case there, and you follow up properly, you will get the certificate certainly. Another important exemption given to startup is under Section 54GB. It is lesser known deduction. As a chartered accountant, we know 54, 54F, but 54 EC, but 54 GB generally we do not know. And friends, earlier this deduction when brought into the statute was for MSME unit, medium and small units. But now that MSME has gone out of this exemption is available only for startup and for the eligible startup only. And what is the deduction? What is the exemption? If an assessee, either being an individual or HUF, and he sells any long-term asset, residential property, only residential property, not any long-term asset, only residential property, it may be a plot or a house, and if they invest the net consideration for subscription the unit of an eligible startup, an individual selling a property, residential property, and they invest into a startup, eligible startup, to acquire at least 25% holding or voting power. And another important condition,
You invest in a startup and startup acquires a new asset. Mere investing in the startup is not sufficient. The startup has to purchase the new asset within 1 year of date of subscription. मतलब मीनिंग देयर भाई, जो स्टार्टअप को नई एसेट परचेज करनी है, द इन्वेस्टमेंट इज टू परचेज द कैपिटल एसेट बाय द स्टार्टअप. अगर वो स्टार्टअप 1 साल में परचेज कर लेता है तो यू विल गेट द deduction. Individual will get the exemption, and exemption is like you get in case of 54F. But please understand, the exemption will not depend how much you invested in the startup. The investment will depend how much the startup invested in the new asset. Cost of new asset is more than net consideration, or if it is less than, if it is more than net consideration, of course there will be no capital gain. For example, if you sell the property of 1 crore rupees and the new asset purchased by the startup is 1.5 crore rupees, of course 100% of the capital gain will be exempt. But if the net consideration, if the net consideration is 1 crore and cost of asset purchase is 75 lakhs, then you will get 75% deduction as given in section 54F. Another area is, as you know, if you do not purchase the asset, then you can deposit the amount in the capital gain account scheme like section 54. But another condition is that the asset should not be transferred within 5 years. What you purchase, what the company has purchased, they should not transfer the asset. Another area was whether these startups, because the asset includes mainly the plant and machinery, but now the computer and software has also been included. But you should not transfer that asset to 5 years. In case of computer and software, the time is 3 years. And moreover, you should also not dilute your equity. Earlier, the limit was 50%. Now the limit has been reduced to 20%, 25%. But you should not dilute your equity below 25% within 25 years. Otherwise, the section 54 GB exemptions will not be available to you. Another deductions or exemptions given to the startup is 54EE. It is almost like 54EC. Any SSE transferring any long-term asset and the capital gain, as you know, in 54EC, if you sell any long-term asset, now that section has been restricted to immobile property. But earlier, any long-term asset was included. But 54EE, any long-term asset, and in 54EC, if you invest the capital gain in bonds, specified bonds issued by NHAI or RFC, there's a specified bond given there, infrastructure bond up to 50 lakhs within 6 months, then you get the exemption. Same is 54EE. The difference is that out of that bonds, in spite of that bonds, it is specified funds. The funds which the government wants to create to finance these startups, this fund was to be created. But the sad part of this section is that the government could not notify the funds under 54EE. Though the section was inducted in 2016, but still we are waiting the funds to be notified. जी प्रवीण जी, should we take a break? अगर आप ब्रेक लेना चाहते हैं, एक सवाल यहाँ पे जो आ रहा है, सर देयर इज सो मच डिफरेंस इन दी टर्नओवर. जैसे कि अभी आपने जो हमें कहा कि टर्नओवर जो स्टार्टअप में एलिजिबल है दैट इज 100 करोड़. समवेयर अराउंड एमएसएमई में टर्नओवर जो नई डेफिनेशन आई है सर, उसमें 250 करोड़ से एक इंक्रीमेंट हो गया. तो क्या मैं दोनों बेनिफिट ले सकता हूँ, स्टार्टअप स्कीम में भी और एमएसएमई स्कीम में भी? सर देखिए ना, मैं आपको बताऊं, पहले तो ये हुआ करता था कि 80 IAC में जो टर्नओवर की लिमिट थी 25 करोड़ थी और 56 to 70 में 100 करोड़ कर दिया था. इनकम टैक्स में 2 टर्नओवर की लिमिट दे रखी थी. ये तो पर्टिकुलर बेनिफिट लेने के ऊपर है. अगर आप 100 करोड़ में हैं तो आप स्टार्टअप तो एलिजिबल रहेंगे. लेकिन अगर मान लो 100 करोड़ से ऊपर चले जाते हैं, आप 150 करोड़ में आ जाते हैं, तो
तो आप क्या करोगे, आप स्टार्टअप एलिजिबल स्टार्टअप से निकल जाओगे पर एमएसएमई रहोगे 250 करोड़ तक। जी, राइट, ठीक है सर। इसमें आपका कुछ और सवाल मैं ले लेता हूँ। इसमें एक सवाल यहाँ पे आया है, आपके सामने स्क्रीन पे होगा। विल DPIIT also provide the technical help for research on an eligible idea? वहां पर देखिए, आप DPIIT, आप स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पे जब जाएंगे तो वहां पर ना इंक्यूबेटर्स के नाम भी हैं और बाकायदा डिटेल्स दे रखी है, नेम एड्रेस दे रखे हैं। और सरकार, जहाँ तक मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं जो इनके सेक्रेटरी हैं उनके साथ मेरा काफी अच्छी दोस्ती है, मैं उनसे मिलता रहता हूँ, तो दे आर वेरी हेल्पफुल। DPIIT इज डूइंग ए वेरी गुड जॉब। आप विज्ञान भवन में इनका शायद ऑफिस है, मुझे नहीं पता कहाँ पर है, शायद विज्ञान भवन में है। पर आप वेबसाइट पे जाइए, अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लीजिए। वंस यू गेट रजिस्टर्ड, automatically you will get mail from DPIIT, and they are very helping people, no doubt about it. Okay. एक और सवाल, please also elaborate on the method to obtain such certificate. Method of to obtain such certificate. देखिए सर, मैंने जैसे बताया कि 2 सर्टिफिकेट अलग अलग है। एक तो आपको रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट मिलता है, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। आप मोबाइल ऐप के जरिए या DPIIT की वेबसाइट पे जाइए, अपना लॉगिन पासवर्ड बनाइए, वहां पर आपको केवल अपना सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देना है और आपको राइटअप देना है कि मैं किस तरह से 5 क्राइटेरिया, इनोवेशन, इंप्रूवमेंट, डेवलपमेंट, वेल्थ क्रिएशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मैं कैसे मेरा ये आइडिया काम करता है। जैसे मैंने बताया कि मैंने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का लिया अभी, अब कंस्ट्रक्शन करती है, वो पुल बनाती है, रोड बनाती है, हमने उस पर भी उसको एज ए स्टार्टअप रजिस्टर्ड करवाया है। तो मेरे कहने का मतलब है सर कि जितने भी काम हो सकते हैं दुनिया में, अगर कुम्हार दिए बनाता है ना और उसको वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू कर दे या उसको वेबसाइट पे डालना शुरू कर दे कि साहब मैं अपनी मार्केटिंग करूंगा वेबसाइट के थ्रू, या जो मैं मिट्टी के घड़े बनाऊंगा मैं इसमें ये डिजाइन बनाऊंगा, ये इंप्रूवमेंट करूंगा, या मैंने मिट्टी में साहब कुछ थोड़ा वो प्लास्टर ऑफ पेरिस मिला लिया, उससे मजबूती आ गई है। तो ये सब बातें हैं, ये सब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। और सबसे बड़ी बात है सर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अगर आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको 500,000 लोगों को लगाना है, अगर आप 10-20-50 लोगों की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकते हैं तो भी आप एलिजिबल स्टार्टअप है। लेकिन आप जाइए वहां पर, आप अपने आप को रजिस्टर्ड करवाइए। जैसे आप रजिस्टर्ड करवा लेंगे सर, उसके बाद अगर आपको ATIAC की छूट चाहिए तो आपको फिर एक सर्टिफिकेट और लेना पड़ेगा इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप से, जिसके लिए आपको फॉर्म 1 अप्लाई करना पड़ेगा। अदरवाइज आप बाकी बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। ओके सर, एक और सवाल प्रशांत जी का, विल द ट्रांसफर ऑफ बिजनेस फ्रॉम पार्टनरशिप फॉर्म टू ए न्यूली इनकॉर्पोरेटेड आल्सो क्वालिफाइड फॉर ATIAC? ट्रांसफर ऑफ, सर मैंने बताया था ना कि आप पुराने बिजनेस से आप नहीं कर सकते। हाँ, एक काम हो सकता है सर, मान लीजिए आपकी 2013 में पार्टनरशिप फर्म बनी, ठीक है, आपने उस पार्टनरशिप फर्म को कन्वर्ट कर लिया, जैसे सेक्शन 47(13) में दे रखा है, you can take over the business of a partnership firm to a private limited company, but the original firm incorporated in 2013, the new firm has taken all the asset and liability, that will be eligible. That will be eligible. लेकिन आप कहो साहब मेरी 25 साल पुरानी फर्म चल रही है, मैंने उसका एक पोर्शन निकाल के स्टार्टअप बना लिया, that is not allowed. It should not be you should not be incorporated by reconstruction or transfer of business or reconstitution. ओके, एक और सवाल मैं ले लेता हूं सर, फिर कंटिन्यू करते हैं। इफ एनी NRI वांट्स टू स्टार्टअप इन इंडिया, वेदर एनी स्पेशल प्रोसीजर इज रिक्वायर्ड? सर देखिए, मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के यूनिट, 3 तरह के एंटिटी कैन बी अ स्टार्टअप। आइदर इट शुड बी अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और इट शुड बी LLP, और इट शुड बी अ रजिस्टर्ड फर्म। एज यू नो, a NRI can be a director in a firm, a company. He can be a partner in LLP. He can be a partner in firm. Of course, then there is no problem. But you have certain take the permission, and you are getting funds from overseas, then RBI permission or FEMA permission. As I said in the beginning of my show also, कि friend, you should also read FEMA. You should also read PM, और थोड़ा थोड़ा आप सब पढ़ लीजिए ताकि आप उसको अंडर बन लू। मैं तो बल्कि कहूंगा, आपने जो चार्ट अकाउंट अगर देख रहे हैं इस शो को, आप क्विक बुक होती है, शायद मैंने तो देखी नहीं कभी, जो जैसे हमारा टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, तो वहाँ पे क्विक बुक है, तो आप उसको भी पढ़ लीजिए, क्योंकि जनरली ये जो स्टार्टअप है उस पर काम करते हैं, तो आपको बड़ा बेनिफिट होगा। कंटिन्यू सर।
Okay, sir. So friends, as I discussed 80 IAC, then I discussed 54 GB, capital gain, 54 EE, it is like 54 EC. Very good deduction was given, but the funds where specified funds where the investment has to be done has not been notified. But as I informed you in the beginning of my webinar, the government has set up a special fund of 50,000 crore. Ministry of Finance has set up a 50,000 crore funds by the government of India to fund these. But this fund was when any person can get the deduction from the capital gain. This fund has not been notified by one region or another, better known to the Honorable Finance Minister. Another deduction, and it was an area of concern for startups. As you know, friends, in case of a closely held company, if 51% of voting power does not be held by the same persons, when the loss has to be adjusted, and in the loss when it occurred, then the loss cannot be carried forward or cannot be set off. This is the law of the land. आप एक क्लोजली हेल्ड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और आपका मान लीजिए 2015-16 का लॉस है, और आप 2000 असेसमेंट ईयर 2020-21 2021 में उसको एडजस्ट करना चाहते हैं. असेसमेंट ईयर 15-16 का लॉस असेसमेंट ईयर 2021 में आप करना चाहते हैं एडजस्ट. द सेक्शन 79 से कि 31 मार्च को जो होल्डिंग 31 मार्च 2015 को अगर 50% होल्डिंग वोटिंग पावर जिसके पास थी और वो वोटिंग पावर 31 मार्च 20 को नहीं है, तो लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ. दिस इज द लॉ ऑफ द लैंड प्रेजेंटली ऑल्सो. लेकिन स्टार्टअप को दिक्कत क्या थी? स्टार्टअप जैसे मैंने बताया था कि शुरुआत में एक आइडिया लेके आते हैं, नए आदमी होते हैं, उनको लॉस भी हो जाता है, और वो एक छोटा सा बनाने के बाद में या कुछ कमर्शियली वायबल करने के बाद में दे वांट इन्वेस्टर्स टू कम इन, आइदर द HNIs or venture capital or somebody else. They don't want debts to be incurred. Debts नहीं चाहते. They want some equity participation from venture capital fund, and venture capital fund are taking a lot of interest in them also. और उन्होंने बहुत पैसे भी कमाए हैं. तो बड़ी दिक्कत आती थी कि how to hold 51%. Now the relaxation has been given to the startup in case of startup. क्या कहा सरकार ने कि if all the shareholders who held the shares carrying the voting power, if they are the same, in my example, as I said, assessment year 5016 means 31st March 2015. आपके पास में मान लीजिए आप 3 शेयर होल्डर थे शुरू में, या 4 थे 25 के. ठीक है जी, आपने अपनी 80% होल्डिंग किसी को दे दी, वेंचर कैपिटल को. अब चारों 5% के रह गए. नाउ इट इज लेस देन 51%. लेकिन अगर वो 4 शेयर होल्डर है, चाहे वो 1% के क्यों ना हो, और सारी इक्विटी किसी को दे दी है, even then you can set off the loss. This is not possible in case of other companies other than the startup. इसका मतलब स्टार्टअप को दोनों बेनिफिट मिलेंगे. एक, या तो उनके पास में सेम शेयर होल्डर हो, 4 थे जैसे मैंने बताया मेरे एग्जांपल में, 4 25 के थे, वो 5 के रह गए, या 1 के रह गए, 2 के रह गए, या 4 में से मान लो 2 चले गए, लेकिन बाकी दोनों के पास में 51% होल्डिंग है, तब भी उसको वो लॉस को एडजस्ट कर लेंगे, अदरवाइज लॉस एडजस्ट नहीं होगा. तो दोनों बेनिफिट दे दिए. पहले इस सेक्शन जब आया था तो इसमें एक बेनिफिट नहीं मिल रहा था, अब सरकार ने दोनों बेनिफिट दे दिए. आइदर यू होल्ड 51%, देन यू विल बी नॉर्मली, of course existing shareholder having 51% on the date of the set off, no problem, or you have same number of shareholders who are holding, maybe the holding may be less than 1%, but the number of shares that all the shareholders, not only number, all the shareholders should carry the voting power, then the loss will be set off, will be adjusted. But as you know, because the startup was up to 7 years of incorporation earlier, now it has become 10 years. Change has not been made in this section. वैसे भी आपको 8 साल के लिए तो मिलता ही है,
लेकिन इसमें ये कंडीशन है कि आपको जो लॉस मिलेगा 7 साल तक इनकॉर्पोरेशन के वही लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा। यानी अगर आप कंपनी इनकॉर्पोरेशन आपकी 2013-14 में है तो आप 2021 तक ही आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अदरवाइज तो आप नॉर्मल प्रोविजन में तो फिर तो 8 साल आप कंटिन्यूस करते ही हैं, उसका इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पर बेनिफिट लेना चाहते हैं तो दो कंडीशन हो गई। नंबर 1 कंडीशन, ऑल द शेयर होल्डर who hold the share should carry the voting power in the year of loss as well in the year of set off. Another, loss should be incurred within 7 years of incorporation. 7 साल तक के जो लॉस हैं वो इस क्लॉज में आ जाएंगे। अदरवाइज आप नॉर्मल क्लॉज में जहाँ 51% आपको होल्ड करना होता है, you have to hold that. Another important, I will say it's not exemption, it's a relaxation, much needed relaxation given to the startup. And friends, I will explain you what is the concept of ESOP. देखिए होता क्या है कि बहुत सारी कंपनीज they give to their talented employees an option to purchase the stocks, to have ownership of the stocks at a determined price. And when that employee exercises that right, or when the shares are allotted, the difference between the fair market value and the allotment price, presently, it is taxable as a salary, as a perquisite under section 17 clause 2 subsection 6. And when the employee sells the shares, the difference between the fair market value and sale price is taken as a capital gain. अभी तक क्या होता है फ्रेंड्स, मान लीजिए आप एक कंपनी में एम्प्लॉई हैं, कंपनी ने आपसे कहा कि ठीक है, यू आर ए वेरी टैलेंटेड पर्सन, हम आपको 3 साल के बाद में, यानी 2021 अभी चल रहा है, 23-24 में अगर आप हमारे साथ रहते हैं तो हम आपको अपनी कंपनी का शेयर देंगे, 1000 शेयर आप परचेज कर सकते हैं एट द रेट ऑफ 50 फॉर एग्जाम्पल। और मान लीजिए आज कंपनी की जो फेयर मार्केट वैल्यू है शेयर की वो 100 रुपए है, तो आपको उस कंपनी ने कहा कि हम 100 रुपए का शेयर आपको 50 रुपए में दे देंगे, लेकिन देंगे हमको 23-24 में, 3 साल बाद। ऑफर हैज बीन गिवन टू यू। अभी आपके हाथ में 2021 में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। 23-24 में आपने क्या किया, आपने शेयर अप्लाई कर दिए, 50,000 रुपए का चेक दिया कंपनी को और आपको 1 लाख रुपए का शेयर मिल गया। मान लीजिए उस टाइम की फेयर मार्केट वैल्यू 100 रुपए रहती है, हम ये मान लेते हैं। तो 50,000 रुपए जो आपको कंपनी ने एक तरह से बेनिफिट दे दिया उस टाइम में, तो सरकार कहती थी ये 50,000 रुपए आपका परक्यूजिट है 17(2)(6) में। तो 50,000 रुपए पर आपको एज ए सैलरी, अंडर द हेड सैलरी, आपको टीडीएस काट लिया करते थे एम्प्लॉयज। और जब आप मान लीजिए उस शेयर्स को बेचते हैं, मान लीजिए आपने शेयर को बेचा 25-26 में, 25-26 में 250 रुपए में एक शेयर, तो 150 रुपए है, दैट विल बी योर कैपिटल गेन। दिस इज द प्रेजेंट सिचुएशन एंड दिस वाज द सिचुएशन, स्टिल दिस इज द सिचुएशन फॉर एम्प्लॉयज अदर देन द स्टार्टअप्स। अब दिक्कत ये आती थी कि लोग कहते थे कि सर देखिए हमें मिला तो कुछ नहीं, हमने तो अपना चेक दिया 50,000 रुपए का, और आपने 50,000 जो हमारा कैपिटल गेन बना, जो परक्यूट वैल्यू बन गई 1 लाख से 50,000 के बीच में, उसमें 30% टैक्स हमसे और ले लिया, टीडीएस और काट लिया हमसे। तो वी हैव नॉट रिसीव्ड एनीथिंग बट वी आर पेइंग टैक्स। दिस वाज द सिचुएशन। अब सरकार ने क्या किया, इस फाइनेंस एक्ट 20 में इसको रिलैक्स कर दिया, लेकिन रिलैक्स इसके लिए किया है ओनली फॉर एलिजिबल स्टार्टअप्स हैविंग इंटर मिनिस्ट्रियल सर्टिफिकेट, नॉट रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप। तो खाली आप रिकॉग्नाइज से काम नहीं चलेगा, आपको टैक्स के बेनिफिट का सर्टिफिकेट भी है अगर आपके पास में, तो आपको चेंज कर दिया 192(1)(c), जो कि डिडक्शन का सेक्शन है। बड़े आश्चर्य की बात है कि 17(2)(6) में चेंज नहीं किया, अभी भी वहां पर चेंज कर दिया। क्या कहा है कि अब आप अगर मान लीजिए आपको स्वीट इक्विटी मिलती है या आपको ईसोप मिलते हैं, तो आपको आइदर विच अकर्स अर्लियर 48 मंथ्स, या तो 48 महीने के बाद में हम आपको
एज ए सैलरी में टैक्स करेंगे उसको, या उससे पहले मान लीजिए आपने 4 साल से पहले बेच दिए, नेचुरल सी बात है आपको जो डिफरेंस होगा वो आपको टैक्सेबल हो जाएगा। जितना प्रोक्यूर्ड वैल्यू में था वो प्रोक्यूर्ड पे चला जाएगा, जितना मार्केट और फेयर मार्केट वैल्यू में था वो टैक्सेबल हो जाएगा। या आप उसकी एम्प्लॉयमेंट छोड़ देते हैं, विच एवर इज अर्लियर। यानी a time period of about 4 years has been relaxed in the taxability of the ESOP shares for the employees of a eligible startup. लेकिन इसमें दिक्कत सिर्फ एक है कि अभी चेंज जो किया 192 1C जो इंट्रोड्यूस किया है फाइनेंस एक्ट 20 ने, वो डिडक्शन के सेक्शन में, टीडीएस के सेक्शन में किया है। 17(2)(6) में अभी भी कोई चेंज नहीं है। दैट अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज परक्यूज्ड। और जैसे सेक्शन 15 जो चार्जिंग सेक्शन है सैलरी का, दिस सेज सैलरी ड्यू और पेड विच एवर इज अर्लियर। दैट्स अ टेक्निकल फ्लॉ which remains while drafting the law, but the intention is to delay the taxability of ESOP up to 48 months unless until either you sell the share or you leave the company before that 48 months, then you will be taxed at that time after 48 months. Meaning thereby that, जैसे मेरे एग्जांपल में अगर आपने 50 रुपए का 100 रुपए का शेयर फेयर मार्केट वैल्यू का कंपनी ने आपको 50 रुपए में दे दिया और आपने बाद में 100 रुपए के शेयर को 250 रुपए में बेच दिया, तो आपको जो चार्जेबिलिटी होगी 50 रुपए टैक्सेबल जो आपकी इनकम होगी अंडर द हेड सैलरी, दैट विल अकर्स आफ्टर 48 मंथ्स। 48 यानी 4 साल के बाद आपको टैक्सेबल होगा, लेकिन उससे पहले आप वो शेयर्स को बेचेंगे नहीं और उस कंपनी को छोड़ेंगे नहीं। दिस इज सेक्शन 192(1)(C। Now this is a very debated issue, एंजल टैक्स। एंजल टैक्स को लेके बड़े सवाल, बड़ी दिक्कतें, बड़ी परेशानियां और बड़ी लड़ाई इस पे हुई है। हमारी भी सरकार से हुई, सरकार की हमारे से भी हुई। और यू विल बी सरप्राइज टू नो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट हैज इशूड 5 नोटिफिकेशन विद इन स्पैन ऑफ 2 years। मतलब ऐसा लगता था कि कितनी कंजूसी कर रहे हैं देने में, और हर बार जब उनको टोकते थे कि साहब दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। नाउ अ फाइनल सर्कुलर हैज बीन इशूड on 19th February 2019. Circular number is GSR 127E and it has been issued by DPIIT. Before discussing that circular, let me come to what a angel tax is. Friends, if a company in which the public is not substantially interested receives from any resident, not from a non-resident, any consideration for issue of shares that exceeds the face value of such shares, the aggregate consideration received for such shares that exceeds the fair market value of shares will be treated as a income of the company. कुछ भी समझ में हमको नहीं आया। क्या है सर, होता क्या था हमारे पहले देश में? Why this section was brought in? You might have read Praveen ji mischief rule of interpretation or Haddon's rule of interpretation. When something is being brought to plug any abuse of the section, लोग करते क्या थे प्रवीण जी? हमारे देश में आपने सुना होगा वन टाइम एंट्री। वन टाइम एंट्री बहुत चलती थी। वन टाइम एंट्री क्या होती थी सर? आप मान लीजिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, आपने 10 रुपए का शेयर 90 रुपए प्रीमियम में किसी को दे दिया, ठीक है सर? 100 रुपए में आपने शेयर दे दिया, 10 रुपए का 90 रुपए प्रीमियम। बाद में वो क्या करता था डायरेक्टर, जो 100 रुपए का शेयर था उसको 2 रुपए में परचेज कर लिया करते थे। तो 92 रुपीज का ये कन्वर्जन हो गया वन टाइम एंट्री के माध्यम से। That was happening. The company was issuing ₹10 share face value share to another person who is taking the entry at a premium of ₹90, total value 100. Then that, because 90 was a share premium of that company, and the director of the company or the relative of those company, they were purchasing those shares from the subscriber
₹10 शेयर और ₹100 शेयर एट ए प्राइस ऑफ ₹2, उसको कैपिटल लॉस हो गया, और क्योंकि उसे बेचने नहीं है तो उसके पास में वो पैसा, दैट वाज वन टाइम। टू प्लग दिस न्यूसेंस इन 2012, our honorable then finance minister, which who was the president of India, Shri Pranab Mukherjee, he brought this section. तो उन्होंने कहा कि साहब, अगर आप मान लीजिए आपकी एक कंपनी है, उसकी फेस वैल्यू शेयर की ₹10 है और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू मान लीजिए ₹25 है, और आप अगर मान लीजिए ₹100 में शेयर दे रहे हैं किसी को प्रीमियम पर, प्रीमियम पे, यानी ₹100 में शेयर दे रहे हैं, ₹10 का शेयर का फेस वैल्यू, ₹25 उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, ₹100 में आपने दे दिया, तो ₹75, ₹75 जो होगा वो आपकी इनकम मान लेंगे कंपनी की। 5627B ये कहता है, बिकॉज यू हैव गिवन more than your fair market value, not from the face value, from the fair market value. और fair market value निकालने का जो तरीका था, as you know in 11 UA, कि आपके पास में जो assets हैं या capital plus reserve divided by number of shares, capital plus reserve minus profit and loss account, debit entry, profit and loss account or miscellaneous expenditure, and that is divided by the number of shares, that is the fair market value. So this was happening. To plug that nuisance, this section was brought. ठीक है, अब दिक्कत कहां पर आई? जब 2015 में स्टार्टअप इंडिया शुरू हुआ, तो जो स्टार्टअप है इनके पास में आइडिया होता है, लेकिन जब इनकी बैलेंस शीट बनती है उसमें असेट्स की वैल्यू ज्यादा नहीं होती, बुक वैल्यू पे होती है, बाकी कुछ होता नहीं है। पैसा खर्च करते हैं, उससे आइडिया बन जाता है, कोई मोबाइल ऐप डेवलप कर लिया, कोई आइडिया डेवलप कर लिया, कोई टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली, और वैल्यूएशन होती है टेक्नोलॉजी की। अब 11 यूए जब वैल्यूएशन करता है फेयर मार्केट वैल्यू की, वो लेता है केवल असेट्स की वैल्यू माइनस लायबिलिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अब जो कंपनियां या स्टार्टअप इस पैसे को या शेयर्स को दिया करते थे प्रीमियम पे, अब उनकी फेयर मार्केट वैल्यू मान लो ₹10 का शेयर है, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू तो आई ₹20 या ₹15 या होता है ₹8 आ जाए, रीजन बीइंग दैट उसको शुरू में लॉस होता है, लेकिन टेक्नोलॉजी की वैल्यू होती है। अब उसने वो शेयर दे दिया मान लो ₹250 में किसी वेंचर कैपिटल फंड को, तो 250 माइनस ₹10 फेस मार्केट जो उसकी फेस वैल्यू है या फेयर मार्केट वैल्यू मान लो ₹15 है, उसका नोटिस डिपार्टमेंट ने उनको दे दिया कि साहब दिस इज योर इनकम अंडर सेक्शन 5627B। और इसीलिए इसका नाम एंजल टैक्स पड़ा, क्योंकि जो स्टार्टअप है उसमें ज्यादातर एंजल इन्वेस्टर होते हैं, दे आर द वेंचर कैपिटलिस्ट व्हिच इन्वेस्ट इन दीज कंपनीज, इसीलिए इसका नाम पड़ा एंजल टैक्स। जब ये बात सरकार को हमने बताई कि साहब दिस इज रॉन्ग, दिस इज हैपनिंग, तो द सेक्शन सेज 5627B, the provision to this section says that this clause shall not apply where the consideration for issue of share is received by a venture capital undertaking from a venture capital company or venture capital fund। अगर आपको ये फंड वेंचर कैपिटल फंड से आ रहे हैं, वेंचर कैपिटल कंपनी से आ रहे हैं, तो ये दिस क्लॉज वाज नॉट एप्लीकेबल। अनदर सेकंड, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाय ए कंपनी from a class or class of persons as may be notified by the central government in this behalf. This is the proviso, this is the clause of the provision under which the DPIIT has issued notification। 5 नोटिफिकेशन सरकार को देने पड़े इसको लाने के लिए, और अब जाकर ये मामला सुलझा है। What is that notification? I will come to that before I complete this section. As I said, फेयर मार्केट वैल्यू, हाउ टू डिटरमाइन द फेयर मार्केट वैल्यू। जैसे मेरे एग्जांपल में ₹10 फेस वैल्यू है, ₹25 फेयर मार्केट वैल्यू है, और ₹100 आपने शेयर दिया था, द फेयर मार्केट वैल्यू हैज टू बी डिटरमाइंड एज पर द नॉर्म्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल 11 UA। आई विल डिस्कस आल्सो दैट। और as may be substantiated by the company to the satisfaction of the assessing officer whichever is held। This was the clause which was hurting also, क्योंकि assessing officer को satisfy करना तो भगवान को बनाने से भी मुश्किल काम होता है, और वो कैसे मानता है हम सबको पता है।
तो इसलिए दिक्कत आ रही थी कि वो अपनी मनमानी कर रहे थे। अब सरकार ने 11 यूए को चेंज नहीं किया, पर जो नोटिफिकेशन में बहुत सारी चीजों को एग्जाम कर दिया, तो स्टार्टअप को बाय डिफॉल्ट एग्जाम कर दिया है फ्रॉम द परव्यू ऑफ दिस एंजल टैक्स और सेक्शन 5627B। Now, what is that notification, which is very important? This notification says the provision of this section 5627B will not be applicable to a DPIIT recognized startup, number one. Number two, if the turnover, of course, is less than 100 crore and investment in the capital is 25 crore, including the share premium. 25 करोड़ तक अगर आपकी शेयर प्रीमियम है या 25 करोड़ तक आपकी इंक्लूडिंग द शेयर प्रीमियम द कैपिटल है, तो आपको ये नहीं लगेगा, दिस 56 नहीं लगेगा। लेकिन एक काम और अच्छा किया, एक तो 25 करोड़ कर दिया, उसको टर्नओवर 100 करोड़ कर दिया। और पहले क्या था इसमें, जैसे मैंने बताया कि 5 सर्कुलर आया, पहले था कि आपको IMG से सर्टिफिकेट लेना होगा, जैसे ATIAC में लेना होता है। अब IMG सर्टिफिकेट नहीं मिलता। हमने कहा था कि साहब आप जब ATIAC छूट दे तो समझ में आता है कि आप सर्टिफिकेट ले लीजिए, लेकिन यहाँ तो आपको छूट थोड़ा दे रहे हैं, आप तो उनको बचा रहे हैं यहाँ तो खाली। तो IMG बोर्ड की अप्रूवल 56(2) के लिए अब खत्म कर दिया, नो नीड टू टेक द अप्रूवल फ्रॉम द IMG बोर्ड। पहले था इसमें कि आपको वैल्यूएशन करवानी है फ्रॉम द मर्चेंट बैंकर, नाउ द वैल्यूएशन क्लॉज हैज आल्सो बीन गॉन। बीच में एक सर्कुलर आया था कि आपको CBDT के पास जाएगी आपकी इंफॉर्मेशन और CBDT डिसाइड करेगी। इन द फाइनल सर्कुलर 127E दिस कंडीशन हैज आल्सो गॉन। अब क्या है, आप सीधा सीधा सा है सर, आपको 2 कंडीशन लगा दी सरकार ने कि पहली बात आपका रिकॉग्नाइज DPIIT में सर्टिफिकेट होना चाहिए स्टार्टअप, दूसरा आपकी इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ होनी चाहिए, और अगर इन लोगों से पैसा आता है तो वो 25 करोड़ में नहीं गिना जाएगा। किस किस से आता है, आपको वेंचर कैपिटल फंड या वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग से आता है, वो 25 करोड़ के अलावा माना जाएगा। आपको नॉन रेजिडेंट से आता है, वो भी 25 करोड़ के अलावा माना जाएगा। या आपको ऐसी किसी स्पेसिफाइड कंपनी से आता है जो लिस्टेड कंपनी हो, जिसकी टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा हो और जिसकी नेटवर्थ 100 करोड़ से ज्यादा है, तब भी वो पैसा भी 25 करोड़ में इंक्लूड नहीं होगा। यानी मान लीजिए आपकी 100 करोड़ रुपए की आपने इन्वेस्टमेंट है स्टार्टअप में और 75 करोड़ इन लोगों से है, वेंचर कैपिटल फंड से या नॉन रेजिडेंट से या स्पेसिफाइड कंपनी से, तब भी आप पर एंजल टैक्स नहीं लगेगा, 5627 भी नहीं लगेगा। लेकिन सरकार ने एक कंडीशन लगा दी कि आपको वो इन्वेस्टमेंट प्रोहिबिटेड असेट्स में नहीं करनी है। प्रोहिबिटेड असेट्स की पूरी डिटेल इस सर्कुलर में दे रखी है, जिसमें ये कहा है कि आप इमोल प्रॉपर्टी नहीं खरीदेंगे, आप गाड़ी नहीं खरीदेंगे, आप कहीं और इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। कहने का मतलब था कि देयर शुड नॉट बी डाइवर्जन ऑफ फंड्स। और एक डिक्लेरेशन फॉर्म नंबर 2 में आपको DPIIT में इस बात की देनी होती है कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, हम ये इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे प्रोहिबिटेड असेट्स में, एज गिवन इन द सर्कुलर और एज गिवन इन 56(10) क्लॉज D, जहाँ ज्वेलरी है, पेंटिंग्स हैं, आर्कियोलॉजिकल वो हैं या बिलियंस हैं, वहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। क्योंकि अदरवाइज लोग क्या करते हैं कि यहाँ से इन्वेस्टमेंट लिया, एंजल स्टार्टअप के थ्रू लिया और फिर डाइवर्ट कर दिया, या कहीं और इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आप ये कंडीशन पूरी करते हैं तो आपको एंजल टैक्स के परव्यू से 5627 से बाहर कर दिया गया है। दिस इज द फाइनल सर्कुलर अबाउट now coming to valuation rule. How to done the valuation of equity shares. Now, one more important thing is that when you will file the return of income, ITR 5 or ITR 6, in case of a startup, then there is a column also there, has been added last year, about the declaration about this, that we are not investing in the prohibited asset. आपको उसको बात का भी ध्यान रखना।
Now, how the valuation of the shares has to be done, as I said, Rule 11 UA is there, and 11 UA has now two parts. This is very important. There is another section 50 CA. I will discuss that also. 50 CA कहता है कि अगर मान लीजिए आपने किसी प्राइवेट कंपनी के शेयर सेल किए, 56(2)(7)(b) में था when you are subscribing for new shares. 50 CA is under the head capital gain. If you are selling the shares of a private company, then the valuation has to be done as per 11 UA. This is a new provision. अगर आपने फेयर मार्केट वैल्यू से कम उसकी सेल कर दिया प्राइवेट कंपनी के शेयर्स, then it will be deemed to be a capital gain under section 50 CA. और 56(2)(10) में जैसे रिसीवर को लग जाता है inadequate consideration, यानी जैसे 50C सेक्शन है इमोरल प्रॉपर्टी के लिए, 50CA आ गया शेयर्स के लिए. अब क्या होता था, क्यों लाए ये सेक्शन? देखिए हमारे यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मान लीजिए लैंड है खाली और उसकी बुक वैल्यू है 10 लाख रुपए. तो लोग करते क्या थे कि उस कंपनी को परचेज कर लिया करते थे. हो सकता है उस लैंड की वैल्यू हो 1 करोड़ रुपए, आपने 10 लाख रुपए में कंपनी परचेज कर ली, 10 लाख में शेयर ट्रांसफर करवा लिए, कंपनी आपकी हो गई. ना तो आपने स्टैम्प ड्यूटी दी और ना ही आपने कैपिटल गेन टैक्स दिया. To plug this nuisance, जैसे मैंने बताया ना कि whenever government is bringing any anti-abuse provision, so there has to be some mischief in existence. तो आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 10 लाख में ट्रांसफर कर ली, तो सरकार ने 11 UA को चेंज कर दिया 50 CA के साथ. यानी 11 UA के अब दो पार्ट कर दिए, पार्ट 1 और पार्ट 2. Part 1 will be applicable for valuation under section 50 CA. Please understand. And part 2 for the angel tax. Valuation will be different. Valuation of the same company will be different if you are valuing for 56(2)(7)(b) and for 50 CA if it has immoral property. तो 50 CA के वैल्यूएशन के लिए जैसे मैंने बताया क्या कहा सरकार ने, to value the shares आप 4 आइटम्स निकाल लीजिए पहले उसमें से, एसेट साइड में से. कौन कौन से आइटम निकालने हैं आपको? फिक्स असेट्स, इमोरल प्रॉपर्टी आप निकाल लीजिए. आपके शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में कोई है, आपने फर्दर शेयर्स लगा रखा है, उसकी वैल्यूएशन के लिए आप निकाल लीजिए. आपकी आर्कियोलॉजिकल पेंटिंग्स हैं वो निकाल लीजिए. ज्वेलरी और बुलियन, ये 4 आइटम अगर आपकी बैलेंस शीट में है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की, आप पहले उनको निकालिए. जो बच जाए नेटवर्थ उसकी, वो तो नेटवर्थ हो गई ए. और ये 4 आइटम निकाले, इसकी आप निकालिए पहले फेयर मार्केट वैल्यू FMV. उस फेयर मार्केट वैल्यू आ गई बी. ए को बी में जोड़िए, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दीजिए और आपकी वैल्यूएशन आ जाएगी. जैसे मेरे एग्जांपल में मान लीजिए 10 लाख रुपए की शेयर कैपिटल थी और 10 लाख रुपए की ही बुक वैल्यू थी प्रॉपर्टी की. उसकी मान लीजिए 2 लाख रुपए का रिजर्व सरप्लस था और 2 लाख का कैश इन हैंड था बैलेंस शीट में. ठीक है जी. अगर आप 56(2) की वैल्यूएशन करेंगे तो 10 और 2 12 लाख हो गया मान लीजिए, और उसको आप अगर नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे तो 12 रुपए शेयर वैल्यू आएगी शेयर्स की. लेकिन अगर 50 CA में वैल्यूएशन करेंगे इसकी, तो आपको जो 10 लाख की बुक वैल्यू वाली प्रॉपर्टी है उसकी पहले वैल्यू निकालिए, वो 1 करोड़ हो जाएगा. 1 करोड़ होने के बाद में आपको 2 लाख रुपए रिजर्व, 2 लाख का कैश इन हैंड है, उसको जोड़ लीजिए, फिर नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दीजिए, तो जो आपकी वैल्यू आएगी 90 + 12 102 रुपए हो जाएगी. सेम कंपनी की वैल्यू 50 CA में दूसरी होगी, 56(2)(7)(b) में दूसरी होगी. प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज द कंसेप्ट वी जनरली फॉरगेट. और क्या करते हैं हम लोग, जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर करते हैं तो हम बुक वैल्यू पर ही ट्रांसफर करते हैं. We can say 56(2)(7)(b) valuation is a book valuation, but 50 CA valuation is a fair market valuation. Please grasp this concept. This is a very important concept. And one more thing and last thing. Now, a column has been added in the ITR forms, ITR 6 and 5. If you say, I think in ITR 6 for private limited company, if you are selling the shares of a private company, if the transfer is there
in the shares of private company, then you have to declare at which value and to whom these shares has been transferred. The reason being that because there is a change in the valuation procedure, now we have to take care of that. Now coming last, how to get the finance from the startup. As I said, Government of India is very keen to develop this startup ecosystem. They are doing a lot, though the process was very slow due to the bureaucracy hurdle. Now I think in the last 1.5 years, the process has started again. Friends, there are two, three ways to get the finance. Number one, as I said earlier also, you can go under the MSME Act and you can get the benefit of loan from the SIDBI or some financial institution. Or because as I said, generally these startups they want equity to be invested rather than debt. Now you have to prepare a very good report of you. You have to prepare a presentation, and there are so many venture capital funds. I think of Reliance also, Times fund also, and so many big corporates are having funds. They are having seminars. They are having presentations. You can go there and apply with confidence, but you have to prepare yourself very beautifully. What we generally made the mistake, we have an idea and we created a company and we are so in a hurry that everybody is there to buy your idea. Please, this is not the case. The idea should be a viable idea. Another, if you are running a viable startup, you can go to SIDBI. This is a government agency, Small Industrial Development Bank of India, and they have a arm, special arm, a consultancy arm, which advises you how to present your case before the investors. Because as I said, the funds which the government has set up, they also doing through SIDBI and some venture capital fund. So you can go there, you can have your company there, but before going for the finance, please ensure you get registered with DPIIT and also with interministerial group, because these two registrations are very important. This is the end of my deliberation. I think I tried to cover each and every aspect of the startup. If you have any question, you are most welcome. Yes, sir. Over to Praveen. Thank you, sir, for very great deliberation from your side. आपने बहुत सारी बातों को हमारे सामने रखा, लाइक टैक्सेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस हुआ, जिसके क्योंकि होना भी चाहिए, क्योंकि टैक्सेशन के अंदर हमें बेनिफिट से ज़्यादा मिलते हैं। टैक्सेशन के अलावा हमें आपने असिस्टेंस के बारे में बताया, तो व्यूवर्स का जानना भी यही था कि असिस्टेंस हमें किस फॉर्म में मिल सकती है। तो सर, मैं बताना चाहूँगा कि आत्मनिर्भर स्कीम के तहत जो सर ने भी हमारे सामने जो पॉइंट रखा था कि लगभग 50,000 करोड़ का इक्विटी इन्फ्यूजन सरकार आपके साथ लेकर के लिए आई है, जिसके अंदर इक्विटी इन्फ्यूज होगी। और सर ने ये भी हमें गाइडलाइंस दे दी है यहाँ पे, कि अपना गाइड बता दिया है कि आप ये सिडबी के द्वारा, सिडबी असिस्टेंस कर सकता है, और भी जो एनबीएफसीज हैं वो आपके असिस्टेंस कर सकते हैं। वहां जाकर के आप अपनी प्रोजेक्ट और जो भी रिपोर्ट्स, अपनी प्रोजेक्शन, एस्टिमेशन, या जो भी आपका फ्यूचर है, इनोवेशन आइडिया एलिजिबल प्रोजेक्ट का, उसको आप लेकर के जाकर के प्लानिंग में ला सकते हैं और उस इक्विटी इन्फ्यूजन का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो सर को अगेन मैं थैंक्स कहना चाहूँगा कि आप हमारे बीच में आए और हमारे व्यूवर्स का यहाँ पे अपना ज्ञान दिया, जो बहुत ही तारीफ के काबिल है। और ये भी मैं व्यूवर्स को कहना चाहूँगा, अगर आपकी कोई भी क्वेरी, कोई असिस्टेंस, कोई टैक्सेशन के बेनिफिट्स, अगर कोई भी क्वेरी आप लेना चाहते हैं, तो वी आर रेडी टू अवेलेबल विद यू, वी आर रेडी टू सर्व टू यू। पीपीटी सर की शेयर्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा सर से लेकर के। एंड वेरी नाइस डेलिब्रेशन सर, थैंक यू अगेन, थैंक यू कि आप मैं लास्ट में यही कहूंगा प्रवीण जी, अपने व्यूअर्स को please go through the website of DPIIT and Startup India.
स्टार्टअप इंडिया में एक बार जुड़ जाइए, अपने आप को रजिस्टर करवाइए। एक कंफ्यूजन, एक मिथ जो रहता है कि स्टार्टअप का मतलब कोई टेक्नोलॉजी की बात है, ऐसा नहीं है। आपको ये डेफिनेशन मैंने जो समझाई है बार बार, आप जाकर रजिस्टर करवा लीजिए एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट। और जो फ्रेंड्स जो चार्ट अकाउंट देख रहे हैं, मैं उनसे फिर कहूंगा, इट इज एन एरिया जी ऑफ वेरी गुड जी प्रैक्टिस, लेकिन जी थोड़ा सा आपको अपने नॉलेज को ब्रॉड करना पड़ेगा। हम खाली जीएसटी, इनकम टैक्स, ऑडिट से ही जिंदा नहीं रह सकते हैं। आपको थोड़ा बिट ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन, सम एनवायरमेंटल लॉ, हाउ टू ड्राफ्ट एग्रीमेंट, व्हाट द अदर लॉ सेज, इंटरनेशनल टैक्स ट्रीटी क्या कहती हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कैसे इस्तेमाल होते हैं विदेशों में। और जो ये जनरली क्या होता है, वेटिंग ऑफ एग्रीमेंट बहुत होता है, स्टार्टअप को जरूरत होती है, वो एग्रीमेंट कर लेते हैं विदेशी कंपनियों से, उनको पता नहीं चलता आप क्या कर रहे हैं। तो इफ वी कैन have a complete under one roof service for the startup, it is going to be a very good area. तो सर ने हमें एक और मार्गदर्शन और दे दिया कि इट्स अ वेरी वेरी वंडरफुल फ्यूचर ऑफ द प्रोफेशनल, कि आप आइए और स्टार्टअप से रिलेटेड अपनी गाइडेंस को लीजिए। और क्योंकि बहुत सारे अब एफडीआईज भी इन्वॉल्वमेंट होने वाली है ड्यू टू आत्मनिर्भर स्कीम, बहुत सारे विदेशों से इन्वेस्टमेंट एफआईआईज की अभी होने वाली, क्योंकि हर इकोनॉमी रिवाइव होना शुरू हुई है। और कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्शन आया कई कंट्रीज में, जिसकी वजह से इंडिया को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। और स्टार्टअप एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका है प्रोफेशन के लिए कि उसके अंदर आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं। थैंक यू सर अगेन, एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वाचिंग। वी आर रेडी टू बी अवेलेबल विद यू अगेन। हम फिर मिलेंगे कुछ और नए टॉपिक, यूनिक टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वाचिंग। Thank you, sir. थैंक यू सर।